Hi everyone. Good morning on Sunday morning है. Um, and the reason I'm making this video is because of a very heartening, or let's say disheartening call that I got from one of the students, um, and that really um jolted me. मतलब काफ़ी मुश्किल था उसको 1 डेढ़ घंटे तक समझाना कि नहीं कोई बात नहीं. So I had to make this video, and I know people mainly see this channel for psychology optionals, but this is not going to be about psychology optional. This is going to be in general the UPSC exam and dealing the pressures that come with it. I'll try to keep it bilingual. I'll also speak in Hindi and English. And यहाँ पे मैं कोई ज्ञानबाजी नहीं करूँगा. I'm not going to say Baba types Gyan. I'm going to give you very practical guidance on how to approach this because I have been a part of this whole process. I have failed the exam, so I am not going to lie. मैं झूठ नहीं बोलूँगा या फिर मैं कुछ ऐसा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलूँगा. I will tell the things as they are. Or I know this is the season where there are lots of topper talks going on, and there will be many people in coaching institutes who are going in person attending these sessions, and there are thousands of videos on YouTube as well. So अगर let's say 1,000 लोग सेलेक्ट होते हैं तो उनमें से कम 200 लोगों के स्ट्रैटेजी वीडियोस तो आते ही हैं. So there is a bias in terms of the memory, especially जब आप जब आप सक्सीड कर जाते हैं तो उसके बाद ये लगता है कि हाँ you try to align your results with your efforts and whatever has worked or what has not worked, right? So I'm going to debunk all that, and I hope we have like some people. I think we have like 3 or 4 people waiting, so that is enough for me. अगर आप में से किसी एक को भी if you get some help, I'll be very happy, and more than happy, I'll be relieved. Okay, so the first thing is because देखो this exam is just a part of your life. This is not bigger than your life, right? And I know the stress is very high, very heavy, and there are expectations of loved ones, of parents, teachers, peer pressure. कोई कुछ लोग 5 साल से 6 साल से एंड द यंगर वंस 2 साल से 1 डेढ़ साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग अभी अभी जॉब छोड़ के आए हैं और इसमें कूद गए हैं, एंड देन दे आर लाइक अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे. एंड add to that the complexity ki this exam is multiple stages, right? एक मिनट, can you hear me? Can someone who's listening, can you just put a hi, or just echo that you're listening to me? I just want to make sure that everything is okay. I will not proceed unless I hear a hi or anything that you can hear me. Perfect. Okay. मेरी नाम का किसी बंदे ने बोला है कि ये सुन पा रहे हैं. Cool. So let me start by telling you that this exam is better. I mean, better stressor than many other things in life. So it's good. And there's a great book by Nassim Tayyab, I think, Taleb, who has written other books, but his second book is called Anti-Fragile. आपको पढ़ना चाहिए अगर आप वो बुक नहीं पढ़े, बट डोंट रीड इट ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन. जब ऐसा कोई प्रीलिम्स मेंस के बीच में गैप हो या मेंस इंटरव्यू के बीच में गैप हो तो उस बुक को पढ़िएगा, एंटी फ्रेजाइल. तो देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कि यार 3-4 तरह की चीज़ें होती हैं दुनिया में. वन इज़ लाइक व्हेन यू कंप्रेस देम दे ब्रेक. द सेकंड टाइप इज़ लाइक when you put them under stress वो बेकार से हो जाते हैं. और तीसरे टाइप के होते हैं जो उन पे आप स्ट्रेस डालो तो और निखर के आ जाते हैं, राइट? सो दैट इज़ कॉल्ड एंटी फ्रेजिलिटी, है ना? तो योर एम इन दिस एग्जाम शुड बी लाइक टू मेक श्योर दैट इस स्ट्रेस को gives you something positive rather than negative in life, right?
अगेन आई प्रॉमिस्ड यू इन द बिगिनिंग कि कोई ज्ञानबाजी नहीं होगी एंड इट विल बी प्रैक्टिकल थिंग्स. सो लेट मी स्टार्ट कि ये इतना प्रेशर आता कहाँ से यार. सबसे पहले प्रेशर आता है नहीं हाइप से. What is the hype about this exam? Agreed. This is an exam for a very good job, right? And it is a very, you know, very top-notch job where you can not just get job satisfaction, you can also help the society and um, you know, it's a very engaging job जिसमें कि बहुत सारे मल्टी डिमेंशनल कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होते हैं आपको एंड देन एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे होते हैं. दैट सेड, it is not the only good job and definitely there are better jobs. ठीक है. सो एक बात तो मान जाइए कि दिस इज you're just appearing for a job, right? And of course it's a job by which you can change society and all the things that I just said, but it's not the only one. ठीक है. तो अपने ऊपर अनड्यू प्रेशर लेना छोड़िए. दूसरी चीज़ है कि जो इसके अराउंड जो आधा अगर आप ये कोर को हटा दें कि इट्स अ वेरी गुड एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल द थिंग्स आई जस्ट सेड, इसके ऊपर का जो इस कोर के अराउंड जो है ना सब हाइप है. टीवी सीरीज आने लगे हैं एस्पिरेंट्स एंड देन वो आईआईटी के लिए क्या है कोटा फैक्ट्री एंड दे आर रोमांटिसाइजिंग दिस थिंग. ऐसा आई थिंक इट्स क्रिएटिंग मोर ऑफ अ नेगेटिव atmosphere than a positive one from someone who is a serious aspirant. Let's not romanticize this. It's not a joke कि इंडिया का 1 लाख यूथ अपने जो सबसे प्राइम टाइम होते हैं जिंदगी के उसके 5 से 6 साल ऐसे ही निकाल दे रहे हैं जस्ट स्टडिंग लक्ष्मीकांत एंड सम रैंडम एंथ्रोपोलॉजी या ऐसा कुछ भी पढ़ के. So here is what I prescribe to you, right? Having failed this exam, reaching very near to it and then failing, faced the interview boards. उसके बाद वहाँ से एकदम सबसे बॉटम मोस्ट पे आके अपने करियर से वहाँ से फिर से ऊपर बना के अपना करियर बना लेना. And I've faced that all, and no, it's not just me. I've encountered many such people in life, including some of my very close friends जो अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में. And I think many of my friends or batchmates जो लोग अभी सर्विस में हैं, they would be happy to trade their lives with those people. So the first thing is, don't worry, अगर ये नहीं होता है तो कोई बात नहीं, right? But a related thing is give your best efforts. उससे होता क्या है ना कि अगर आप बेस्ट एफर्ट्स अपना नहीं दे रहे, if you are like okay this is my first attempt, let's see कम से कम प्रीलिम्स निकाल लेते हैं उसके बाद सोचेंगे, you don't realize your potential. It's all about realizing your potential, right? So आपको पता ही नहीं कि आप हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप रैंक 1 बन सकते हैं. और हैं एग्जाम्पल्स आपके पास, राइट? एक मैम है जिनकी सिस्टर ने इस बार फिर से निकाला है, राइट? तो यू कैन डू इट. तो दैट्स इट यार. मतलब अपने आप को झोंक दो पूरा, बिकॉज इफ दिस इज एन ऑर्डील, लेट दिस ऑर्डील एंड इन एज लेसर टाइम एज पॉसिबल, राइट? उसके बाद जो होगा होगा. एंड द नेक्स्ट लॉजिकल फ्लो इज कि अपने लिए ना एक वो बना लो, आई एम गोइंग टू गिव 2 attempts, 3 attempts, 4 attempts, आपके लिए जो भी सही बनता है. डोंट गो बियॉन्ड 4 attempts, right? If you are already in your 4th attempt, you are already in your 5th attempt, it does not apply to you. But if you are in your first attempt, second attempt, don't go beyond the 4th. यूपीएससी ने दे रखे हैं 6 attempt, just fine. अगर आप सर्विस में चले गए हो तो ठीक है, आप दे लो 5वां 6वां. बट अगर आप सर्विस में नहीं हो एंड देन 3-4 अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है, तो हो सकता है आपका 5वां अटेम्प्ट में हो जाए, राइट? बट it's not worth the opportunity cost, है ना? It is possible. People have cleared this exam 5th attempt, 6th attempt में काफ़ी अच्छे रैंक लाए हैं जिनका प्रीलिम्स भी नहीं हो रहा था 4 अटेम्प्ट में. I agree, हो सकता है आपका, but somewhere you have to draw the line, and draw the line during the start of your preparation कि 3 अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है, 4 अटेम्प्ट में I'm going to call it quits. ठीक है? उससे क्या होगा ना, you will naturally give your best in all these attempts. राइट? सो यूपीएससी का जो भी एज लिमिट है, अटेम्प्ट लिमिट है, लेट इट बी.
you give, you know, you give yourself a line, I'm going to make just 2 attempts in this exam or just 3 or 4, and never skip an attempt. वो तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, अनलेस कि यू हैव सम वेरी बिग इलनेस या कुछ ऐसा है, कोई ट्रॉमा है, फैमिली इश्यूज हैं. डोंट स्किप दिस एग्जाम कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ. नहीं, दैट डजंट वर्क. व्हाई आर यू नॉट प्रिपेयर्ड? दैट्स योर प्रॉब्लम. You will still count that as an attempt, right? It's so disheartening to see people, just giving attempts after attempts and then skipping one in between, and then before they realize they are like 33 years old. I mean, 33 years में तो क्रिकेटर्स का करियर खत्म हो जाता है यार, आपका शुरू भी नहीं होगा अभी. So draw a line, right? Tell yourself like कि I'm not going to give beyond this attempt, and then give your best in that, right? उसके बाद 2 ऑप्शंस आएंगे आपके पास. एक्चुअली 3 तरह के ऑप्शंस आएंगे. एक तो आप सक्सीड कर जाओगे, जिसकी की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी अगर आपने अपना बेस्ट दिया है तो. दूसरी है कि आपको कोई छोटी मोटी सर्विस मिलेगी. एनीथिंग बियॉन्ड IRS को मैं छोटी मोटी सर्विस बोल रहा हूँ. आई मीन आई एम जस्ट बीइंग ब्लंट एंड ट्रूथफुल. सो IAS IPS IFS एंड देन IRS. उसके अलावा कुछ भी होता है तो आई एम जस्ट सेइंग कि आप फिर से एग्ज़ाम दोगे ही दोगे आप. इट इज़, एंड इनफैक्ट IPS वाले IRS वाले भी देते हैं. So, I mean, then you can continue giving your attempts, but that is the second scenario, which is, I would say, you know, I don't know, it's a very dicey scenario. The third is कि आपका नहीं होता है 3 अटेम्प्ट्स में या 2 अटेम्प्ट या एक ही अटेम्प्ट देना है मुझे, वट एवर. तो उस केस में, both these outcomes, right? The first outcome and the third outcome are good for you, I would say. The middle one outcome is like, I won't say that's the best outcome. The third outcome is best. Sorry, it's better between the second and the third one. तो इसलिए give your best. क्योंकि होता क्या है ना, अगर आपका सेकंड आउटकम आता है तो उसके बाद आप अपने फैमिली शुरू करते हो. उस समय यू गेट मैरिड, यू हैव किड्स, एंड देन फिर भी आप बैठ के एग्जाम दे रहे हो, राइट? क्योंकि मुझे अच्छी सर्विस चाहिए. एंड आई हैव सीन दैट लाइफ ऑफ सम फ्रेंड्स. दे आर हैविंग अ गुड लाइफ, बट this is not the only thing in life. You don't want to be doing this. You have to, go out and contribute. You have to channel your energies for your service. You have to give your passion back in the field. But instead of that, you are taking sabbatical and then anyway. तो third attempt होता है, जो third case होता है, it's good for you. जो जैसा मेरे साथ हुआ, मुझे नहीं दिया है UPSC ने. 5-6 नंबर या 7 नंबर से मेरे को फाइनल लिस्ट में नहीं आया. तो इट्स फाइन. आई थिंक अगर मुझे ले लेते और लास्ट रैंक पे लेते तो इट वुड हैव बीन वेरी बैड फॉर मी. एंड मेनी अदर फ्रेंड्स एज वेल, राइट? अब क्या है कि नाउ दैट यू हैव क्लैरिटी फर्स्ट आउटकम या थर्ड आउटकम में, तो फ्रॉम देयर ऑन यू कैन बिल्ड इट, राइट? अब यहाँ पे 2 तरह के सिचुएशंस आते हैं. सम पीपल से डोंट हैव एनी प्लान बी. पर्सनली आई डोंट अग्री विथ इट, बट आई अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, राइट? मुझे पता है वो क्या बोलना चाह रहे हैं. वो बोलना चाह रहे हैं कि यार अगर तुम्हारा प्लान बी होगा स्टेट सर्विसेज या प्राइवेट नौकरी या आई डोंट नो फैमिली बिजनेस, तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे. तो it's a personal thing whether you have a plan B or not, but I would say you know at least have a faint idea of what you may want to do, right? Don't have a plan B like proper channel, but at least have कि अगर नहीं हुआ तो ये कर लेंगे कुछ. एक तो होगा कहीं किसी कोने में. अगर वो भी नहीं है ना तो डोंट वरी, इट्स ओके. फ्रॉम देयर ऑन यू कैन let's say if that happens in 27-28 साल आपकी ज़िंदगी में, it's happening at 27-28, there are still a lot of things you can do in this present thriving economy, India and globally. There are skills that you can learn within 6 months, within 1 year, and you can enter a field. ठीक है, obviously you'll have to start small, you'll have to start afresh, but you can do it. I have done it. People have done it, right? And they're as good as any other person who started like 4 years back in that field with them. In fact, they're better than them. So there are ways you can do things on this. But ये आपको इसके पहले पिछले सारे स्टेप्स फॉलो करने होंगे. आपको अपना बेस्ट देना होगा, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, आपको कोई भी एक आउटकम आता है उसको एक्सेप्ट करना होगा. एंड आई टेल यू व्हाई यू शुड नॉट गेट डिसहार्टन्ड आपका अगर थर्ड आउटकम आता है तो, राइट? देखो, इट्स ऑल अबाउट
आई वॉन्ट से, अगर 1,000 लोग सेलेक्ट होते हैं तो इसका मतलब 1,000 लोग ही वर डिजर्विंग, राइट? It's it's a game of probability here, and the chances of your success increases if you have if you have worked harder. If you have worked hard and things click, बहुत सारे variables होते हैं. So it's like um, you know आपका उस समय परफॉर्मेंस, देखो भाई पूरा फनल है, राइट? इट्स अ फुल फनल. फनल समझते हो ना, मतलब ऊपर चौड़ा एंड देन फाइनली द आउटकम, राइट? सबसे पहले तो आपने कितना पढ़ा, राइट? उसके बाद आपको कितना रिटेन हुआ, उसके बाद आपको आपने उसके बीच में आ जाता है कि आपने कितना रिवाइज किया, उस दिन एग्ज़ाम में आपने जो पढ़ा उसमें से कुछ आया कि नहीं, फिर उसमें से अगर कुछ आया तो आपको क्लिक किया कि नहीं, क्लिक किया तो आपने उसको सही से लिखा कि नहीं, उसके बाद आता है कि वो एग्जामिनर कौन था. मैं मेंस की बात करूँगा, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स राइट नाउ. एग्जामिनर ने को वो उसने पढ़ा कि नहीं पहले, राइट? उसको 250 बंदों की कॉपी चेक करनी है, और वाई देर आर every chances that he will skip something very important that you have taken the efforts to remember, recall and present in that answer paper, right? तो एक वो होता है. उसके बाद उसने उसकी मार्किंग स्कीम क्या है, वो 10 में से 6 देता है अच्छे आंसर्स को, या 7.5 देता है. देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स. उसके बाद आता है कि बाकी लोगों ने कैसा किया, राइट? बिकॉज इट्स अ रिलेटिव एग्जाम. तो आपके साथ कौन से लोग compete कर रहे हैं. So at the end of that funnel, you know, whether you get selected or not, or if you get high marks or not, is determined. So it's a highly probabilistic game, there's a lot of ifs and buts in it. एंड ऐसा नहीं है कि किसी बंदे का अगर 600 रैंक आया तो उसका रैंक 10 नहीं आ सकता था, राइट? सो it's 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 always about putting your best and then leaving it to whatever happens. ठीक है, वही है. आई मीन जो सदियों पहले जो ज्ञान दिया गया ना, फोकस ऑन द प्रोसेस, forget about the outcomes, that still holds, and that will continue to hold in whatever field you go, right? So now that you probabilistic, आपने अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा ली. लेट्स से अगर आपने बहुत मेहनत किया, 90% प्रोबेबिलिटी होगी. पहले तो आई लाइक टू डिबंक दैट. 90% प्रोबेबिलिटी किसी की होने की नहीं होती है. इतना करने के बाद या फुल्ली प्रिपेयर्ड हो ना, तो भी आपकी 60 से 65% प्रोबेबिलिटी होगी. मतलब देयर आर लाइक 35% चांसेस, टू 35 to 40% चांसेस दैट यू विल फेल, राइट? इवन इफ यू गिव योर बेस्ट, राइट? So you know because of this uncertainty, it's okay to accept, and this is not a failure, this is a part of life. उसके बाद आप अपना बिल्ड कर लीजिए. अच्छा, इन सब के बीच में एक कांस्टेंट चीज होती है स्ट्रेस की. कुछ लोग तो होते हैं जो मतलब बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में 4-5 साल, राइट? सो दे आर लाइक उतना स्ट्रेस नहीं लेते. या फिर कुछ लोग नेचुरली ऐसे होते हैं, उनको स्ट्रेस नहीं आता, हंसते खेलते सब गुजार देते हैं. सो अगर आपको बहुत स्ट्रेस होता है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हाउ मेनी पीपल यू आर कनेक्टेड विथ हु रियली केयर फॉर यू. उसमें आपके पेरेंट्स आते हैं, आपके कोई सिबलिंग्स हैं, ब्रदर्स सिस्टर्स हैं, लव वंस हैं, कोई फ्रेंड है. जस्ट स्टे कनेक्टेड टू देम यार. अगर वो कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, अगर वो स्कूल के फ्रेंड्स हैं, आपकी कोई पुरानी जॉब थी उसके फ्रेंड्स हैं, if there is some uncle in family who you are close to, or a cousin, just stay connected to them, talk to them, keep talking to them. It's okay. Prelims नहीं हुआ कोई बात नहीं, it's completely fine. मतलब हजारों, आई थिंक काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि लोगों का 3 अटेम्प्ट तक प्रीलिम्स ही नहीं हुआ, एंड 4th अटेम्प्ट में दे आर अंडर 50, राइट? इट्स फाइन. मेंस नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. इंटरव्यू नहीं हुआ कोई बात नहीं, it's okay. Till the time you have followed step 1 and 2, that means you have followed the process, you have given your best, and then you also have put a maximum timeline. It's fine. अगर आपने जैसे ऐसा अपना टाइमलाइन बोला है 4 अटेम्प्ट, राइट?
एंड देन फोर्थ अटेम्प्ट पे आपका ना एक मार्क्स से छूट गया मेंस. लेट्स इमेजिन दिस सिनेरियो. स्टिल बी स्ट्रिक्ट, डोंट डू एनीथिंग, don't think about appearing again. So बिकॉज क्या पता है अगले अगले अटेम्प्ट में फिर से वही हो जाए, या फिर एकदम आप एक मार्क्स से छूटे, अगली बार 30 मार्क्स से छूट जाओ. So there's no guarantee, right? So if you have followed all these steps, then and then, you have remained stress free, तो आपकी लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा रहेगा बस, and which you can easily overcome. It's like a टेस्ट मैच. उसका एक सेशन, टेस्ट मैच का एक सेशन खराब हो जाए, कोई बात नहीं, you can still you know make it over, right? फाइनली आता है कि what are the possible situations or scenarios where you can go to. In in several cases people already have something to fall back upon. Let's say अगर आप engineering stream से हैं तो आपको and I think majority of engineering ही होते हैं आजकल, तो I'll go with that first. अगर आप engineering stream से हैं तो just go towards computer science. There's ample dearth of talent right now. लोग नहीं मिल रहे हैं, लोगों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं मिल रहे हैं, डेटा साइंटिस्ट नहीं मिल रहे हैं, एनालिटिक्स प्रोफेशनल्स नहीं मिल रहे हैं, टेस्टर्स नहीं मिल रहे हैं, मैनुअल टेस्टर्स नहीं मिल रहे हैं, टेस्टिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी नहीं मिल रहे हैं. आप तुरंत कोर्सेज कर सकते हो, आप कोडिंग सीख सकते हो, आप कोई बड़ी बात नहीं, 6 महीने लगेंगे, यू विल लर्न इट, राइट? अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो एनालिटिक्स, अगर आपका मैथ्स वगैरह अच्छा है तो आप एसक्यूएल सीखना है, एक्सेल सीखना है, एंड देन यू आर इन, एंड थोड़ा बहुत पाइथन या आर सीख लेना है, टैबलो वगैरह. चलिए, इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम एन इंजीनियरिंग डोमेन, राइट, या फिर इफ़ यू डू नॉट हैव एनी फॉल बैक ऑप्शन, अगर आप डॉक्टर वगैरह हैं तो फिर तो यू नो व्हाट टू डू, राइट? अगर आपके पास लॉ की डिग्री है तो गो इनटू दैट प्रोफेशन. लेट्स से अगर आपके पास कोई आर्ट्स की डिग्री है, एंड देन यू jumped into this preparation. Let's say आपके पास you are a bachelor's in psychology, right? So then there are there are always options of state services. There are options in the academic field. Academia, I have a very close friend जो भी academia में बहुत अच्छा कर रहा है, right? He was from arts background and he's doing really well. तो आप रिसर्च स्कॉलर वाला आपने उस फील्ड में बैचलर्स किया है या मास्टर्स किया है तो there would be some amount of interest, right? You can build your career in that. Yeah, it's not a big deal, and you can do. आजकल ऐसा हो गया ना सिस्टम कि no matter what field it is, if you are in top 10 percentile, you will earn what the rest 10 percentile are earning in their respective fields, right? Maybe not immediately, but within 10, 15, 20 years में आप उसी level, the area under the curve will be the same for all professions. So, but yeah, if given that you have to be in that top 10 percentile, तो एकेडमिया है. उसके अलावा एक और प्लान भी होता है लोगों का, एंड दैट इज़ लाइक आई वोंट रिकमेंड यार, मतलब दैट इज़ लाइक स्टेट सर्विसेज, एंड पता नहीं, इट्स अ पर्सनल चॉइस, बट आई वुड पर्सनली नॉट इनकरेज यू. अगर आपका दिल अंदर से इच्छा नहीं है तो डोंट गो फॉर इट, इट्स ओके, राइट? क्योंकि आप इस फील्ड में हो, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, वो ऑलरेडी सर्विसेज में होंगे, देन आपको हमेशा लगता रहेगा आप एक और अटेम्प्ट भी दिए बिना रह ही नहीं पाओगे, राइट? सो आई वुड से देयर आर लॉट्स ऑफ फील्ड्स, lots of youth required everywhere across all domains. So don't restrict yourself. Let's not destroy the youth and the energy of educated mid-20s early 20s folks. ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग फोर्स होते हैं. इसमें से लोग आधे लोग अगर इसी में रह जाएंगे तो I don't know, I don't think it's a good thing. So I'm just putting down this video so that if you get anything out of it, whether it is drawing a line about number of attempts, whether it is giving your best no matter यही है बस, don't skip any attempt. Have a plan B or not, it's up to you. I would personally have something. And finally, don't, there's no need for any stress, right? If you are if you're well connected to your family members, your loved ones, you are good, and failing is not a big deal in this exam. उसके बाद भी failures आते हैं यार.
there was there was a district magistrate, a late district magistrate from Buxar, Bihar. He committed suicide. He was rank 14th in his time, right? He was an IAS officer. He was very, very sharp guy. So stress led to that as well, right? So it's about life. It's not about an exam. It's definitely not about an exam. Even if you clear this exam, the outcome one that I was talking about, there are still challenges, there are still hurdles, there are still hassles, right? Okay, I'll end this video. If you find you have a specific scenario, please comment on this chat. अगर अपने आईडी से नहीं फेक आईडी से कर दो, I'll reply to it. I'll try to reply to it how you should go about it, right? And I know now hundreds of people who have failed this exam and made a very good living out of their lives. मैं आपके सामने बैठा हूँ and I'm doing good. I will do good, and I have known a lot of friends who are doing better than me and will continue to do better than some of their peers as well. So what I'm trying to say is, if you have confidence in your abilities, if you're talented, don't worry, yaar. Even if this exam does not accept you, the world will accept you, the life you have will accept you. All right, thank you everyone. No need for any stress, no room for any stress. Life is a celebration. Let's just enjoy, work our best, and give our best, and whatever comes, देख लेंगे यार क्या है.